Welcome back. Now I have immense pleasure to introduce our next speaker, Dr. Professor Paramjeet Singh, Department of Law, Punjabi University, Patiala, where he served from 1979 till 2008. He has a rich academic experience of more than 41 years. He is presently serving as head and dean, University School of Law, Shri Guru Granth Sahib World University, Fatehgarh Sahib. May I now request Dr. Professor Paramjeet Singh to familiarize us on the topic of cases of NRI marriages solemnized in India, issues and challenges. Thank you very much, madam. So as madam has already introduced me, and you had been already listening to eminent persons like judges of High Court, and Madam Madhu has also been with you before on 2 occasions. So it would have been better. I have already told to Madam Madhu that had it been face to face instead of this online, because had you been present here, then we would have better interaction. But nevertheless, as desired by you all people, there is no option because of the weather and because of other climatic situations. We are here. So I think almost this is the last session. Almost everything must have been covered on this. I hope you are all heading the family courts. Am I correct? Family court. Yes, sir, they are all heading family courts, and Family courts. cases of NRI marriages have not been discussed so far. Okay, okay. That's fine. So family courts, you must be knowing that this act was passed in the year 1984. And recently it has been amended again in the year 2022. With regards to, just in very brief, just with regards to your Himachal Pradesh and your Kohima, these 2 places, they have even amended this particular act. And they have, in fact, in Himachal Pradesh, these courts were already working. Both the places at 3 places in Himachal Pradesh, in your Shimla, in your Mandi, and the third one is at Dharamshala. So in Nagaland, it was working at your Kohima and at one of more places. But then they were already working, but the act of this amendment act of parliament in the year 2022 had given them approval with regards to retrospective effect. This is permissible under the law of the land. You must be knowing it. And they have in fact regularized. They are all working. That whatever they did, whatever they have established, this is considered to be a valid procedure. So they have given it a retrospective effect. Since you are all well educated, well aware, this can be given retrospective effect because if you have read this Family Courts Act of 1984, there it is very clear that the family courts could be established in consultation with the appropriate High Court, and the High Court obviously, when it will be constructing, will have to discuss the matter with the concerned state government. Recently, here in the Punjab also, the government has approved the establishment of 14 more family courts. So this can be given anyway. So I mean, there is no procedure. Even if a particular act has been amended, it can be implemented in parts. The implementation of a particular act is only operative from the date of its enforcement. This is left for the parliament. I just give you one example regarding the constitutional law. The 44th Amendment Act of the year 1978, which brought so many changes. These changes were in fact not in totality implemented. This could be even implemented in parts. Just one example regarding to Article 22, dealing with your preventive detention. This particular aspect was not implemented regarding the compositions of advisory board, regarding the period of detention. This was left aside.
And the people had gone to Supreme Court. The famous case A.K. Abbas versus Union of India. A.K. Roy versus Union of India, 1982 Supreme Court. This was 77 writ petitions, and mostly they were from the state of Punjab, requesting the court to please implement it, because there were so many detainees under NSA from the state of Punjab. And since the time was already over, the Supreme Court only observed that let us hope that good sense would prevail of our Union of India, and they would soon come out with a gazette publication for its implementations. So Act can be implemented in parts. There's no necessity that has to be implemented in totality. So is the family courts. They are implementing it in parts from state to state, as and when the situations, things are proper. So this is just a background. So far, this NRI marriages are concerned, non-resident Indian marriages. I mean, these marriages are in fact not only considered to be disastrous marriages, but creating so many social problems. You must be very aware since you are dealing with this. I'm reminded of one very great personality, Swami Vivekananda ji. Swami Vivekananda ji once observed he had a very short tenure of life. He survived only for 39 years. He was from West Bengal, a Bengali gentleman. He had once observed that marriages in abroad are only for achieving womanhood, whereas marriages in India is to achieve motherhood. So he was even conscious at that particular time, 1862. His date of birth was just 12th of January, which we just passed, on which day we celebrate Youth Day. He had observed that while marriages here in India is to achieve motherhood, but in abroad this is simply to achieve womanhood. So I mean, this is how the difference is there in the marriages solemnized with a foreign person or with an NRI or with overseas, in whatever name you call, different names have been given to it. But then this is the situation now. And even so that is while he in fact represented here in India. One more thing I would like to tell you regarding Swami Vivekananda ji. He represented India in the religious conference held at Chicago, New York. And by that he became world known, world famous. He was a disciple of Ramakrishna Paramhansa, although Ramakrishna Paramhansa also died at a very young age of just 25, just 50. It is on record that Ramakrishna Paramhansa kept on waiting for his disciple, Swami Vivekananda ji, that he would one day come back and meet him. I don't know whether this was possible or not, but this was the situation. These two were great personalities. Ramakrishna Paramhansa, as well, the Swami Vivekananda ji especially, he was also unmarried, but he was a lot of caring for the woman caste, as here in our Indian system. Dr. B.R. Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar is very conscious, very particular about the upliftment of women. So was Swami Vivekananda ji. So here, this is the NRI marriages are in fact generally solemnized because of two reasons, to my mind. One is to become rich or to earn, to have a very luxurious life, or attracted by the foreign stories. The people believe that, well, the lives in abroad is very luxurious, very useful, very earning. Earning is definitely there. This is one reason. Generally, second reason was that people migrated to the other countries just to earn more and more business, to do more and more business. If you remember, Ashoka the Great, after his winning over Kalinga, he moved to the south. Samudragupta also moved to the south with the only intentions of becoming rich overnight. And they certainly became rich overnight. There's absolutely no doubt. Some people migrate to the foreign countries to do business, as you all must be doing. That East India Company came here in India in the year 1600 to do business. Just remember, they were only 20
24 persons who came here in December 1600. And by the Battle of Plassey, these people became the ruler of the country. Do you think this would be possible that a few people, few one, which we call as Banya community, the Banya community would go to a foreign country, or can you think that we can go to a foreign country and could become the ruler of that particular country? This is unthinkable, but they could do it. This was their farsightedness. This was their wisdom. So they came here only for the purpose of business, but then subsequently they become the ruler and they ruled it till the passing of the last act of British Parliament, Indian Independence Act of 1947. So whenever I talk about this East India Company, I am reminded of one thing. Have you ever heard the name of Digboi, place Digboi? Where is Digboi? आपने कभी सुना है Digboi का नाम? Where is Digboi? Digboi is in the state of Assam. And in Digboi, Digboi is the place where the first oil refinery was established here in India. They're still working. And even nowadays, it is not that easy to go to Digboi. And during those days, when East India Company people went there, they did not only find out the place, but they even established a beautiful colony there, beautiful township there, and started earning. They used to tell the people, dig boy, dig, and the name was Digboi. So basically earlier, this was the purpose behind to go to a foreign country. Nowadays, people also go to foreign country, but this NRI marriages is only one way of going there. Business people also go, but they think that this is the easy way to go abroad. I had been also to various countries. And I myself found that while the people who have migrated to those countries, they do not, in fact, majority of them do not, in fact, enjoy a respectful life. Only few are there who enjoy, who work decently, who work in the prestigious jobs and enjoy a decent and dignified life. Majority of them, majority of the Indians, or rather majority of the Asians, they do menial jobs. And that is very disheartening. At least I got very much hard. I tell you one thing, when I was for a few days at Dubai, I met with a gentleman in the evening in that hotel. He was having one nameplate, Mr. Chawla. I said, Chawla ji, kitho belong karte ho? And I am from Delhi. How many years you are residing here? He said, for the last 10 years. Are you happy here? Very, very happy. What is your designation here? He said, I am general manager. Within my presence, when I could complete my dinner, in the next table, the persons woke up and he started cleaning his table. In fact, there people do not mind that whatever work they are doing. I mean, doing anything is not considered to be in any way disgraceful. There is also a plus point according to my mind. But somehow that disheartened me that भाई इतने अच्छे लोग हैं और काम कैसे कैसे करते हैं ये हमारे मुझे ऐसा लगा कि जो हम अपने इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ यूपी बिहार ਦੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ I belong to village Sohal Gurdaspur. In my village, you'll be surprised to know that there is a 7-story building. And that is only because their wards had migrated to foreign countries. And they thought that if they construct 7-story building in a village, their name would be considered to be of very high profile nature. उन्होंने बड़ी इज्जत मान होगी लेकिन वो उसका कोई फायदा नहीं होया ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਹੀ ਜਾਨਵਰ ਜੁਨਵਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ So, but nevertheless, basic purpose foreign country ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ NRI ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ NRI marriages ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਬਾਹਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
तो फिर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है, तो फिर यही जी NRI मैरिज का जो मेन रूट काज बनता है ਜਿਹਦੇ बेसिकली ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ बेसिकली नहीं है. मेरी पर्सनल नॉलेज, this is within my personal knowledge, that even girls have started taking this use to go to abroad. I just give you in a very brief one particular specific example about which I am familiar and which happened only 1 year back. A marriage was organized to newspaper. The girl was from Amritsar. Even I remember her name. Then the boy was from Delhi. The marriage was arranged, and I also had been to that particular marriage. After the marriage, I found that the girl is something very, very over smart. She started drinking whiskey in front of everybody after the celebration of marriage in the reception party. And that was an incident which shocked me. कि भाई एक ऐसी लड़की है, हुने हुने ब्याह है तो ड्रिंक कर रही है. Anyway, they went for honeymoon, सब कुछ थे रहे 1.5 महीने 2 महीने. Then they went to Australia, पर्थ चले गए. पर्थ जाके उथे she had already been having a boyfriend there. उस दिन नाल उसे भज गई. She ran away with her boyfriend. So ਅਸੀਂ कहिए कि लड़के ही कसूरवार है, ऐसी गल नहीं है. Even the girls I have seen, this is my personal experience, and there in Perth they lodged a complaint with the police. And that complaint was forwarded to the police at Amritsar, which I had to deal with subsequently and resolve it, because I have so many students in judiciary and so many students in police. So with the help of those my police students, I could resolve it. Otherwise, the parents who were residing in Delhi, they would have been the sufferers. So ਇਹ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਲੜਕੇ ਡਾਉਰੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਡਾਉਰੀ ਮੰਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ. आजकल actually to nowadays even the parents teach their own girls in such a, I mean they treat equally with their sons. इतनी अच्छी एजुकेशन देते हैं, हर चीज इतनी अच्छी देते हैं. उसके बाद हम और जो कई दफा लड़के आजकल मैंने देखे हैं इतने वेल एजुकेटेड नहीं होते. बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे नॉलेज में है, पटियाले के भी हैं, आप उसके बाद आपके दिल्ली के भी और मेरे नॉलेज में है, जिसमें लड़के कुछ नहीं कर रहे, वेले बैठे ने, लड़कियां बाहरों आके ब्याह के ले जाती हैं. एक पटियाला का लड़का सी आई, since I was working at Punjabi Institute for so many years, one boy was from Patiala. He went to Canada. ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਗਏ ਉੱਥੇ according to Sikh religious rites. Those were very, very impressive. ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ. Then they went there. ਜਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ. ਇਹਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ. He stayed there for considerable period and then ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ. तो जैसे कि सिर्फ लड़के कसूरवार ऐसे नहीं है, लड़कियां भी कसूरवार है. और पीछे जे कोण ਵਿਆਹ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੜਕੇ ਕਿ ਭਈ ਚਲੋ ਫੋਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ. ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਲੜਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ तो ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ. And they keep on waiting because लड़की आएगी ले जाएगी. So what I intend to say that, well, if we say this is the only boys who are responsible, definitely to start with, the boys were responsible. Boys used to perform here. ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ. When the girl used to go there, they used to find surprise that the boy is already having a wife, already having a children. ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ. ਇੱਥੇ the marriage they performed here in India with the promise that I will come back soon, arrange your everything, your visa, your passport, your all the expenses I would bear. The girls keep on waiting. Sometimes the girls keep on waiting, even delivers the child, the boy never responds, never comes back. So I mean problems are multi-dimensional. So multi-dimensional ਹੈਗੇ ਆ, तो what we should do then? क्या करना चाहिए हैगा? वैसे तो अपना ज़्यादा private international law that should in fact enact certain legislations
at par with their international treaties to deal with such types of problems. लेकिन क्या होना वही काफी है मैरिज तो एनआरआई मैरिज ਤੇ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਕਰਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਕਰਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਲਓ ਰਾਈਟਸ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਾਫੀ ਹੈ laws ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ under the marriage can be solemnized under any particular act there is no bar तो इस तरह ही फिर जो हम डाइवोर्स करना हैगा लड़का तो ब्याह करके चलाएगा बाहर लड़की ब्याह करके चलेगी बाहर तो डाइवोर्स प्रोसीजर कितने इन्वॉल्व होंगी इंडिया च होनी कि उस कंट्री च होनी जिथे गए हुए ने अगर हो गए फॉरेन कंट्री ने कोई डिक्री ऑफ डाइवोर्स इफ दे हैज बीन ग्रांटेड द क्वेश्चन इज हाउ दैट डिक्री ऑफ डाइवोर्स वुड बी इंप्लीमेंटेड हियर देन इन दैट केस सेक्शन 13 सीपीसी देखेंगे कि भाई ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक है कि नहीं है तो इंप्लीमेंट हो जाएगी नहीं है तो नहीं होगी तो क्या वो जो जजमेंट देता है वो जजमेंट जो हैगा वो बाइंडिंग होएगा कि नहीं होएगा then here the question would come out applying the section 44 of the Indian Evidence Act. You must be knowing section 41, 42, 43 and 44 of the Indian Evidence Act 1872. More than 4 million people are NRIs nowadays. इतने लोग जा चुके हैं सो इतने लोग जान गए तो ब्याह शादियां तो होनी ही होनी है ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਣੀ ਪੈਗੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ the government has in fact established so many offices law commissions भी है women commissions भी है different from time to time the government has been issued certain notifications to regulate all these affairs लेकिन क्या all these regulations are in fact effective or not क्या divorce proceedings इंडिया में लग सकती है कि नहीं लग सकती तो you have been dealing with all these things being very learned people so how all these things would be solved the ultimate via media क्या है आजकल तो वैसे generally when we used to arrange legal aid camps or whenever since I had been a teacher of law ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ every month I receive one problem from the universities even in the universities where the people are educated they face with this problem not to talk about uneducated people uneducated study problem cut away educated se zyada hai and this is the one reason is of feeling all these problems is that well even the girls they have become at par with the boys and even they have bypassed boys अच्छी गल है करना चाहिए हैगा but they're becoming independent they are having more earning capacity they're being more better employment sometimes leads to these types of problems how these are to be tackled how these are to be solved so generally ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ sometimes it becomes very very difficult so whenever they come to us ਕਿ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ 498 पहले AIPC लगा देता and you all know that this is a cognizable non-bailable non-compoundable offenses nevertheless Supreme Court has given so many decisions on this particular point nevertheless the different governments have issued different notifications that well before the person is to be arrested proper investigations will have to be done ठीक है हैगा but nevertheless this is considered to be a cognizable offense. This is considered to be a non-compoundable offense, non-bailable offense. I believe I have seen elderly people running whenever they find a knock that police aa gayi hai ji pakad waste because the girl has lodged a complaint. So ये ਜਿਹੜੀ matrimonial problems है सिर्फ NRI ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੈਵਲ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ everywhere this is there 498 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ जो ਅਸੀਂ एक्सपीरियंस ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ so that misuse will certainly be have to be tackled agar it tackled if this is not tackled the family problems would always keep on arising आजकल generally वैसे ही ब्याह बहुत लेट होते हैं you must agree 25 27 28 साल तक एजुकेशन नहीं मुकदियां फिर नौकरियां नहीं मिलदियां and if you get a job जाके 27 28 जब ब्याह होया तो अगर प्रॉब्लम होगी and once this problem is there regarding matrimonial dispute
I hope you will all agree that it will take minimum 10 years, if not amicably solved. So if 10 years लगे तो 27 साल तो 37 साल बंदा पहुंच गया, बच्चे का की बनेगा, ना होर विआह होवे ना बात होवे ना कुछ होवे. So social problems बहुत है, not to talk about only NRI marriages, even the domestic marriages. Everywhere you would find all these types of problems. So the only question is to how this could be tackled. Grounds तो वही है. One can claim maintenance. One can claim judicial separations. One can even file divorce proceedings here or there in the country where they are residing. It's open to everybody. So the question is, what would be the effect of that particular decision obtained in a foreign court? That is considered to be more material. So what do you think? Since you are all dealing with this particular thing, what could be the best solutions to deal with these types of problems, tackle these types of social legal problems, so that the rate kuch cut jave? Obviously, one thing I would like to tell you that this is certainly said that, well, prevention is better than the cure. So you'll have to be very, very cautious while undergoing such marriages. If you are cautious enough and then the marriage is solemnized, then that could happen anywhere, whether this is an NRI marriage or overseas marriage or the marriage here in the country itself. Even marriages could be solemnized there, marriages could be solemnized here. This could be according to their one person from abroad, person from here in India. Both persons might be from India and then they go abroad, or both persons from abroad they come here and they marry and then fly over to that countries. All these problems are intermingled. So, but what could be the best solutions? क्या इसका solutions हो सकता है? So that problems are minimized. एक तो ठीक है जो मैं दस्या, I hope you would agree कि भाई precautions लो जिन्ना ले सकते हैगे हो, बच्चों को independent करो. ये नहीं है कि भाई जाकर उसे रुल जानो, और foreign country च जाके होर तो कोई हुंदा भी नहीं. If the girl is taken away to a place where none else than the husband is known to her or known to the family, the result की होएगा. And there she finds that, well, he is already married, living with somebody else. फिर क्या होएगा? वो तो कुड़ियां भी करने लग पई हैं. मतलब ये कोई हाइपोथेटिकल नहीं है, कोई इमेजिनेशंस नहीं है, हार्ड रियलिटी है. शायद ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ must have heard in your day to day functioning. ਸੋ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਜੋ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇੰਨੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? Do you have any other better solution than this? Legislations तो जिन्हें मर्जी बना लो, already हैगे भी नहीं. Generally, I find India is a land of legislations. पड़े हुए ने legislations. एक सब्जेक्ट के ऊपर you will be surprised to know 35 कानून बने हुए ने, 35 कानून, more than 40 legislations are there. पर ਉਹਦਾ ਹੁਣ implementations ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? लड़का बाहर बैठा है, लड़की बाहर बैठी है, लड़की बाहर बैठी है, लड़का इंडिया जाएगा, चला गया, ब्याह करके चले गए. ये तो एक किस्म का जनरली वी कहने कि एक कैजुअल मैरिजेस है, हनीमून टाइप मैरिजेस है. मतलब ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ बस ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ मतलब है कि एक बेबी ਉੱਥੇ भी है, एक बेबी ਇੱਥੇ भी है. ऐसे बहुत सारे केसेस थे. ऐसे ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੁਣ how to stop all these things and NRI marriages? Questions of maintenance, questions of divorce, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇसेस ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 44 ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਨਰਲ, I hope you must be remembering section 41. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ let me refresh your memories if you're not remembering 41. Judgments in your matrimonial proceedings, we generally call it, there are 4 types of judgments under section 41. Matrimonial proceedings, insolvency proceedings, probate proceedings, admiralty proceedings. We call it as judgment in rem. And judgment in rem is considered to be binding against everybody.
whether he had been a party to it or he had not been a party to it. Judgment in personam is binding only between the parties. Otherwise, अगर कोई matrimonial proceedings में divorce हो गया या कोई हो गया, that is considered to be binding against everybody in the world. So अगर binding है, तो क्या होना? This could be reversed. So that judgment could be by the Indian court. That judgment could be by even a foreign court. उत्थे भी लगता है. If this is the decision by the foreign countries, then whether this could be reopened here in India or not. Because judgment in NRI में तुमने सब पता ही ना हुए. जनरली suppose insolvency proceedings है या probate proceedings है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ फैसला सुना देगी. इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है, 10 बंदे को पैसे लेने, 5 बंदे को पार्टी बनाता, 5 को पार्टी ही नहीं बनाया. The remaining 5% would be also binding to this particular decision because this is considered to be judgment in them. And this could be only reopened on 2-3 grounds that the court passing this judgment was not having jurisdiction, or while this court was not competent, some material facts were concealed, then only it could be reopened. Otherwise, तो होता ही नहीं है. So, obviously, if this is by the foreign court also, Section 13, if not violated, CPC, if strictly adhered, not violated, then that will have to be implemented here also in India. So the same is the situation everywhere. So what do you think, what could be the best way of dealing with these types of problems? NRI marriages. It will keep on happening. चलती रहनी है, बंद नहीं होनी है. तो मेरे ख्याल से यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सावधानी बरती जावे, पूरा प्रिकॉशंस लेता जावे, उस तो बाद भी हो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते. बट मेरा ख्याल है आजकल this should not happen that well at any cost one wants to go abroad. That should not be the only tendency at the risk of the career, at the risk of the person, the girl or the boy himself or herself. This should be taken very carefully by the parents. और legislations तो थोड़ा strong बनाओ private international law के concept के मुताबिक. Legislation should be made more stronger, keeping in view the international law, private international law concepts. फिर तो ठीक है. Otherwise the problem तो हैगी. विकास गोयल का केस ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਈ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਏਗੀ, I mean they had suggested only that any marriage which is solemnized here in India, that should not be permitted to be dissolved by any decree of a foreign court. That was a suggestion. क्या ये हो सकता है? This was suggested that any marriage which is solemnized here in India between a foreign couple or with anybody, that should not be permitted to be dissolved in a foreign country. Do you think this could be possible, keeping in view the international treaties, or keeping in view the reciprocity of the nature of private international law? Reciprocal services है, reciprocity ही है, जिसे बेस के ऊपर लॉ चलते हैं. क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता? So what is your opinion? हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखो ਤੁਸੀਂ चले जाओ इधर किधर नवा शहर चले जाओ, इधर होशियारपुर चले जाओ, ਤੁਸੀਂ देखोगे मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनिया पईया, रहने वाला कोई नहीं. बच्चे बाहर गए हुए ने, पैसे कमा के भेज रहे ने, बुजुर्ग इतने बैठे ने. पैसा तो बहुत है, but at what cost? At the cost of one individual, at the cost of the children. वो तो हैगा ही हैगा. So ये सारा all these problems will have to be tackled in totality. Otherwise the problem तो always रहनी है. So do you think that this विकास गोयल का जरा केस ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ stress ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ if marriage solemnized in India should not be permitted to be resolved by any foreign court, would be possible, would be permissible? ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ possible है या नहीं है, या फिर सिमिलर legislation उन्होंने पास कर देता
तो फिर अपना की बनेगा. You also please speak out something. If you have any question, आप कुछ सवाल सुनते पूछिए. Any question you have? कोई सवाल है आपके पास? गुड इवनिंग सर. हाँ, गुड इवनिंग. सर ये तो चलो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, हमें प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं. जो एनआरआई हस्बैंड या वाइफ है, उनकी सर्विस कराना इज अ मेजर इशू. अगर इंडिया में डिवोर्स प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, उनका पहले तो एड्रेस नहीं मिलता. इंडिया में उनके एड्रेस पे समन भेजते हैं, वो कह देते हैं जी बाहर चला गया, और बाहर का हमें एड्रेस नहीं. उनकी सर्विस कराना इशू है. डिवोर्स इंडिया में भी लेना मुश्किल हो जाता है उनकी सर्विस के बगैर. सर यही ये बात है ना कि भाई जैसे अब इंडिया में वाइफ ने 498 का पर्चा दर्ज कर दिया क्रुएल्टी का. हस्बैंड बाहर बैठा है, डाइवोर्स की प्रोसीडिंग वहां फाइल कर दी. तो डाइवोर्स का प्रोसीडिंग वहां फाइल कर दी और वहां उनको डाइवोर्स कोर्ट ने ग्रांट भी कर दिया. तो क्या ये जो 498A का पर्चा है यहाँ कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा? प्रॉब्लम तो बहुत है. वहां उन्होंने इन्होंने यहाँ से उनको मेंटेनेंस क्लेम दे दी इंडियन कोर्ट्स ने. जो लड़कियां रह रही है उसको मेंटेनेंस दे दी, जो बच्चे रह रहे हैं उनको मेंटेनेंस दे दी. हस्बैंड बाहर है, उसने वहां डाइवोर्स की प्रोसीडिंग फाइल कर दी, डाइवोर्स ही मिल गया. तो क्या बच्चों के लिए और वाइफ के लिए यहाँ मेंटेनेंस मिलेगा उसको? उसकी जो एग्जीक्यूशन कैसे पॉसिबल है? ये भी सर मेजर मतलब इशू है. ऑर्डर पास किए हुए नहीं हो रहे एग्जीक्यूट. हाँ जी, हाँ पूछिए. So fixation of the maintenance is also one problem because there we can't find out his salary also, na? कुछ नहीं है. अगर कोर्ट मतलब उसके वाइफ के स्टेटमेंट पर या हस्बैंड के स्टेटमेंट में कुछ लगा देती है तो उसका कोई प्रूफ तो होता नहीं. तो क्या कैसे होगा? जो एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि वहां हस्बैंड कहीं बाहर बैठा है, लड़की यहाँ बैठी है, वहां उस कोर्ट ने डाइवोर्स कर दिया. जो मैंने आपको बताया था अमृतसर का केस, तो वो शादी यहाँ हुई, डाइवोर्स वहां हो गया, उसका पर्थ में डाइवोर्स हो गया. ये तो अलग बात है कि घर वालों ने कहा चलो पीछा छूटा ऐसी लड़की से, वो चुप कर गए. ऐसे केसेस होते, क्या करेंगे आप? So तो there जो must उन्होंने be a कहा, fund. There must be a fund by the state to give to such destitute wives, sir. Sir, I strongly believe it. हाँ वो तो ठीक है आपकी बात. अब जैसे उन्होंने कहा कि भाई जो मैरिजेस इंडिया में परफॉर्म हो वहां फॉरेन कंट्री की कोई डिग्री उसको डाइवोर्स नहीं कर सकती. तो ये नहीं, अगर ये हो जाए तो ये नहीं ठीक. मैरिज तो यहाँ हुई है, तो फॉरेन कोर्ट पे किसी इसका डाइवोर्स नहीं हो सकता. लेकिन वहां मैरिज हुई, यहाँ दिल्ली में चले गए, ऑस्ट्रेलिया पर्थ चले गए, वहां एलिगेशन लग गया, वहां के कोर्ट में पर्चा दर्ज हो गया, कोर्ट ने डाइवोर्स दे दिया, मैरिज खत्म हो गई. लड़की वहां, लड़की जिसके पास रहना था चली गई, लड़का वहां घूम रहा है बेचारा अकेला. क्या करोगे आप? सो ये प्रॉब्लम तो है. इसके लिए देखिए लेजिस्लेशन तो बहुत है. लेजिस्लेशन भी मेरे ख्याल से किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं, आप भी मानते होंगे. जितना मर्जी, मैं जनरल एग्जांपल देता हूं. जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980 का, इसके सिमिलर हमारे पास चार, मतलब 4 तो सेंट्रल लेजिस्लेशंस है, 4+2 6, और 27 स्टेट लेजिस्लेशंस है. 33 लेजिस्लेशंस है जो एक दूसरे की कार्बन कॉपी है. आपको टाइम का भी मिले पढ़ लेना, एक्सेप्ट सेक्शन 3. इतने लेजिस्लेशन होने के बाद भी पंजाब में बेसिकली प्रॉब्लम हुई कि वही नहीं. एनएसए बनाई पंजाब के लिए गया था, पंजाब ने अपना लोकल कोई एनएसए पास नहीं किया. जम्मू कश्मीर ने पास किया अपना 2 सेपरेट, आसाम ने किया, बंगाल ने किया, बिहार ने किया. अब प्रॉब्लम थी पंजाब में, पंजाब के लिए सेंट्रल पार्लियामेंट ने एनएसए बना दिया. 37 लेजिस्लेशन है और फिर भी सबसे ज्यादा गड़बड़ एनएसए की पंजाब में ही हुई. थाउजेंड्स में यूथ या अरेस्ट होते रहे. तो कानून तो बहुत है, और उसका फायदा कोई नहीं हुआ. सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने कहा था when he introduced this first bill on this in the shape of Preventive Detention Act 1950, that I had many sleepless nights before I could introduce this bill in the parliament. क्यों? सारी उम्र किसके खिलाफ लड़ते रहे. जब हाथ में आजादी आई, they could not pass even a single year of independence or republic rather without having these legislations. उनको पास करना पड़ा.
और उन्होंने कहा था कि 1 साल के लिए है, 1 साल के बाद इम्प्लीमेंट करते करते, अमेंड करते करते 14 साल चला। 1974 में आकर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 को रिप्लेस किया बाय कॉफी पोसा 1974, और उसकी कार्बन कॉपी थी। फिर प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग किया, फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट किया, फिर प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988 किया। सारे कार्बन कॉपी है। कानून बनाई जाओ, तो कानून बनाकर ये जो सोशल प्रॉब्लम्स है मैरिजेस की, इसका मेरे ख्याल से कोई हल है नहीं, ये नहीं टैकल होगा। और मोर ओवर टैकल और डिफिकल्ट है जब लोग कुछ बाहर है, कुछ यहाँ लड़का या लड़की बाहर है और लड़का या लड़की यहाँ इंडिया में है। ये तो मल्टीपलिसिटी है प्रॉब्लम की। इस बेटर है जितना जल्दी हो सके इससे छुटकारा पाया जाए। इसलिए हम जनरली बच्चों, हम हमारे पास जो आते हैं उनको ये सलाह देते हैं कि भाई इसको अपने घर के लेवल, पंचायत के लेवल में सॉल्व कर लो, अपने थ्रू मीडिएशन सॉल्व कर लो, थ्रू रिकंसिलेशन सॉल्व कर लो, हाथ से हाथ लेके लोक अदालत में सॉल्व कर लो। क्योंकि कोर्ट में जाओगे तो 15 साल 10 साल तो धक्के खाने खाने, आपको पता ही है। कोर्ट में जो मसला चला गया 10 साल तक सॉल्व ही नहीं होता। दिस इज द प्रॉब्लम। और एनआरआई मेडिसिन में तो ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। मुझे नहीं लगता कोई कानून बना दे सरकार, कोई नोटिफिकेशन सरकार बना दे, जो मर्जी कर दे, इसका कोई हल होने वाला है अनलेस पीपल अपने आप कॉन्शियस नहीं होते, सावधान नहीं होते, प्रिवेंशन नहीं लेते। जो मैंने कई एक लाइन में इसको खत्म किया था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अनलेस लोग खुद सावधान नहीं होते, ये प्रॉब्लम मल्टीपल होती ही रहेगी, मल्टीप्लाई होती ही रहेगी। आपको रोज ऐसे केस सुनने को मिलते रहेंगे, खत्म नहीं होता। अपने बच्चे हैं, लड़का है लड़की है, उसका फ्यूचर है, अगर हम नहीं ध्यान रखेंगे तो कौन रखेगा? तो इसके लिए सावधानी बरतनी जरूरी है। एजुकेटेड क्लास के लिए ज्यादा जरूरी है, अनएजुकेटेड के साथ। अनएजुकेटेड में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितनी एजुकेटेड में है, क्योंकि हमारे एजुकेटेड में वो भी है ना, वो सेल्फ रेस्पेक्ट प्रॉब्लम है, इको प्रॉब्लम है। वो बस वो जो है कि भाई हम तो कमाते हैं, हमारा क्या कौन बिगाड़ लेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम वुड कीप ऑन मल्टीप्लाइंग। सो बेसिकली जनरली आई वुड लाइक टू टेल यू, तो हमारे समाज में जो है ना, एथिकल वैल्यूज की रिवाइवल जरूरी है। चाहे वो 498 एक ही समाप्ति के बारे में कह दीजिए, या और कोई क्रेडिटी कह लीजिए, और कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट कह दीजिए, जब तक एथिक्स नहीं आता, एथिकल वैल्यूज रिवाइव नहीं होते, इसका कोई भी सॉल्यूशन है नहीं। एनआरआई मैरिज में अगर इंडियन लॉज में एक है तो उसमें 10 गुना ज्यादा है डिफिकल्टीज एनआरआई मैरिज में। उसका पता नहीं चलता कहाँ रह रहा है, ढूंढी जाओ, सबल सर्व हुए कि नहीं, उनको कोई इंफॉर्मेशन हुई कि नहीं हुई। जैसे मैंने बताया कि लड़की को मेंटेनेंस बांध दिया, अब लड़के को इन्फॉर्म किया कि नहीं किया, नहीं पता, ही कुछ नहीं। सो ऐसे करते करते इट वुड कीप ऑन मल्टीप्लाइंग। इसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, जितने मर्जी कानून बना दीजिए। अभी भी तो बहुत सारे बने हुए हैं जहाँ आप करते हैं, मैरिज परफॉर्म करते हैं, जिससे मर्जी कर दीजिए, लेकिन उसका अल्टीमेट सॉल्यूशंस तो आपके, मेरा तो ख्याल यही है कि पीपल शुड बी मोर कॉन्शियस। लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि इसके नुकसान क्या है, इसके फायदे क्या है। पीपल विल हैव टू बी एजुकेटेड, पीपल विल हैव टू बी सेंसिटाइज्ड। जितनी सोशल प्रॉब्लम्स है, मुझे उसका एक ही हल लगता है कि लोगों को सेंसिटाइज कीजिए, लोगों को एजुकेट कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए, लोगों को चौकन्ना कीजिए, और जितना हो सकता है प्रिवेंशन लीजिए, फिर ही सॉल्यूशंस है। कानून पे कानून बनाई जाओ, उसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। आप रोज कानून को डील करते हो, मैं आपको क्या समझाऊं? और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन यू हैव, आप कुछ पूछिए। कभी आपसे फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा तो ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए, अभी भी फेस टू फेस ही आप लोग सब बैठे हुए सामने, सारे नजर आ रहे हैं। होपफुली आपको मैं भी नजर आ रहा हूँ। सो कोई भी सवाल, एक सवाल तो पूछ लीजिए कि हम वाइंड अप करें। एनी वन क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, और जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं है? सो आप एग्री करते हैं जो मैंने कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सेंसिटाइजेशन, एजुकेशन टू एजुकेट द पीपल इज बेटर स्टेप। क्योंकि जो आपने देख ही लिया, कानून जितने मर्जी स्टेप उठा लें,
जो मैंने कहा, आई होप यू एग्री विद ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, शुड आई टेक इट दैट यू एग्री विथ व्हाटएवर आई हैड प्रपोज्ड, व्हाटएवर जो मैं कह रहा हूं, इससे आप एग्री करते हैं? ठीक है, जाना है बाहर जाइए। हम वो ईस्ट इंडिया कंपनी तो बन नहीं सकते कि सारे कंट्री इस कंट्री को ही हम कब कैप्चर कर लें, जैसे अंग्रेजों ने किया था। हम रूल तो कर नहीं सकते कहीं जाकर, लेकिन जो एक कपल का दूसरा पार्ट है, चाहे मियाँ है चाहे बीबी है, उसके ऊपर तो रूल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसको भी छोड़ देंगे, कम से कम उसका उसके ऊपर तो कंट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? भैया देखिए, अगर हमारे हिंदुस्तान का सारा कानून जो है ना, सारा कानून है ये ब्रिटिश ओरिएंटेड है। हम उस ओरिएंटेशन पे रहते हैं। एंटायर इंडियन लेजिस्लेशन इज ब्रिटिश ओरिएंटेड। जनरली मैं पूछता हूँ कि भाई भारत का संविधान किसने बनाया? कहते हैं कि जी बी आर अम्बेडकर साहब ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया। ऐसी एक भी चीज बता दीजिए जो बी आर अम्बेडकर साहब बना रहे थे, जो हिंदुस्तान में पहले थी नहीं। कुछ भी नहीं है, सब चीज पहले ही थी। जो सब चीज पहले ही थी तो फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या बनाया? बी आर अम्बेडकर साहब ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में क्या बनाया? एक भी चीज बता दीजिए मुझे। कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स है, एक भी बता दीजिए जो पहले यह नहीं था। तो यही जो है, मैरिजेस के बारे में सब कुछ है, एनआरआई मैरिज का सारा कंसेप्ट है, सारे कानून है, सब कुछ है, लेकिन इसकी जो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की अगर हो, वो पॉसिबल है नहीं। हैड बीन विद द इंडियन जुरिस्डिक्शंस की प्रॉब्लम भी आती है। अगर जुरिस्डिक्शंस में है फिर तो ठीक है, अगर जुरिस्डिक्शन में है ही नहीं, हमारे हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो फिर जो ये एनआरआई स्टेप्स। मैरिजेस में अगर ऑफेंस होता है, दैट कैन बी कवर्ड अंडर सेक्शन 188 सीआरपीसी, इफ आई एम राइट। ऑफेंस तो कवर है मैडम, ये जो मैरिज है ये तो कोई ऑफेंस नहीं ना है। ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। वो तो कवर है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की मैडम प्रॉब्लम आती है ना। इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? इंडियन कोर्ट्स ऑर्डर कर देती है ये मेंटेनेंस। इंडियन कोर्ट ने कहा कि 498 का पर्चा दर्ज हो गया, बाहर की कोर्ट ने ऑलरेडी डाइवोर्स दे दिया, तो क्या करेंगे आप? उसको मानेंगे कि इसको मानेंगे? ऐसा हुआ है बहुत सारे केसेस में। मैंने उनको बताया एक केस विकास गोयल का, हमारे यहाँ 498 का पर्चा दर्ज कर दिया लड़की ने, चल रहा है, कोर्ट ने मेंटेनेंस दे दी, ना मेंटेनेंस मिली, बाहर की कोर्ट ने उसको डाइवोर्स दे दिया। तो ये जो कंफ्लिक्ट है ये चलता रहता है, इसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसका तो यही है तरीका कि थोड़ा आप खुद अलर्ट हो जाए, सावधान हो जाए। बच्चों को बाहर भेजने के पहले आजकल टेंडेंसी है कि आइलेट्स करो बाहर जाओ, आइलेट्स करो बाहर जाओ। तो ध्यान रखना चाहिए बच्चे को बारे में कि बच्चे जाकर किसी गलत संगत में ना पड़ जाए। पंजाब में तो ये बहुत ज्यादा टेंडेंसी है। मेरे खुद के गांव सब खाली हो गया, सब बाहर चले गए। अब क्या करेंगे आप? पैसे नजर आते हैं, एजुकेशन नजर आती है, कुछ लोग जाके बाहर पढ़ भी लेते हैं, वो तो ठीक एस्पेक्ट्स है, पैसे भी हैं, एजुकेशन भी है। लेकिन जब ये मैट्रिमोनियल की बात आती है, वहां लोगों को जो मैंने स्टेप बताए, अगर ये स्ट्रिक्टली फॉलो हो, तो मेरा ख्याल है कि ये जो एनआरआई मैरिजेस में कमी जरूर आएगी, खत्म तो ये फिर भी नहीं होने लगा। एनी सो एनी अदर क्वेश्चंस? क्वेश्चन? हाँ जी, कोई सवाल आप पूछ सकते हैं आप। सर अगर मैरिज बाहर हुई हो और बाहर ही रजिस्टर्ड हुई हो दोनों की, जी, तो इंडियन कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट कर सकती है क्या सर? इंडियन कोर्ट्स को क्या मनाही है, क्यों नहीं कर सकती? मैरिज मैंने बताया था, अगर मैरिज एक लड़का बाहर का है, लड़की यहाँ की है, या लड़का बाहर से है, लड़की उल्टा भी हो सकता है, लड़का बाहर से है या लड़का इंडिया से है, वो लड़की वहां से आई, कहीं से भी है, मैरिज वहां हो यहाँ हो, जब हम उनके कोड को सेक्शन 13 के अंडर इंप्लीमेंट करते हैं, तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है? जो 13 सीपीसी है वो फॉरेन जजमेंट के बारे में भी है ना, तो उसके अंडर हो जाता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कहीं भी हो। There are judgments also on this point, which I can share. I'll share with you. But there are certain gray areas regarding Section 18 of Foreign Marriages Act. वो कौन सा बताइए? There are issues regarding the domicile of the parties. देखिए, अब जैसे हमारा सेक्शन 15
आर्टिकल 15 सब कॉन्स्टिट्यूशन सब क्लॉज 3 है। उसके अंडर पार्लियामेंट, आपको आर्टिकल 15 याद है? नो सब क्लॉज 1, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सब क्लॉज 3 उसकी एक्सेप्शंस है। वुमेन के फेवर में पार्लियामेंट जो मर्जी लॉ पास कर दे, बच्चों के फेवर में पार्लियामेंट जो मर्जी पास कर दे। हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप का है, लेकिन वाइफ का डोमिसाइल अलग अलग भी हो सकता है, अकेला नहीं हो सकता। ये नहीं है कि जनरली जो हस्बैंड का डोमिसाइल वाइफ का डोमिसाइल, ये कुछ जरूरी नहीं है। सिटीजनशिप एक है, नेशनलिटी एक है, डोमिसाइल के दो भी हो सकते हैं, रेजिडेंट अलग अलग हो सकते हैं, डोमिसाइल भी अलग अलग हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सो डोमिसाइल के लिए अब जैसे सिटीजनशिप है, हमारे इंडिया ने बहुत सारे कंट्रीज को डुअल सिटीजनशिप दे दी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि भी हम डोमिसाइल से अलग अलग नहीं हो सकता, हो सकता है। तो वो ग्रे एरिया क्या, जरा बताइए स्पेसिफिकली मुझे क्या है डोमिसाइल की प्रॉब्लम। ठीक है, आप सेक्शन 13 सीपीसी को क्या करेंगे अगर डोमिसाइल अलग अलग नहीं है तो? क्या उसको कैसे नजरअंदाज करेंगे? No, but in these marriages, Section 18 of Foreign Marriages Act is applicable vis-a-vis the provisions of Special Marriage Act. कैसे? उसमें एक सेक्शन है कि वो जो स्पेशल मैरिजेस एक्ट प्रोवाइड करता है कि जो फॉरेन मैरिजेस हैं वो हाउ दीज कैन बी चैलेंज इन इंडियन कोर्ट्स। तो वहां पे इशू आता है डोमिसाइल का। अब पार्टीज क्या है कि मैरिजेस बाहर हुई हैं, बाहर ही रजिस्टर्ड हुई हैं, वन ऑफ द पार्टीज इज ए फॉरेनर, देन द इशू राइजेस के वेदर दिस मैरिज कैन बी चैलेंज्ड इन इंडिया और नॉट। देखिए, इंडिया सॉवरेन कंट्री है। इंडियन हाई बट कोर्ट, बट इंडियन हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को इनहेरेंट पावर है। वेरियस हाई अंडर कोर्ट, द अंडर द इनहेरेंट पावर, कोई भी क्लॉज हो, कैसा भी हो, कोई भी कानून हो, अगर स्पेसिफिकली लिख भी दिया जाए ना किसी एक्ट में दैट दिस इज विद इन द नॉट द जुडिशियल ऑफ सो कोर्ट, स्टिल दैट कैन बी टेकन अप। ऐसी कोई मनाही नहीं है। हम अपने सॉवरेनिटी को किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। फॉरेन में क्या लॉ लिखा हुआ है उससे हमने नहीं लेना, वहां डोमिसाइल का क्या कंसेप्ट है हमें उससे क्या लेना देना। लेकिन जो ये हमारे सॉवरेनिटी को हम अपने अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जो भी है हम कर सकते हैं। हमारे अगर हम बहुत सारे ऐसे कानून का आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, बहुत सारे लॉज है मुझे पता है, जिसमें पार्लियामेंट ने लिख दिया दिस कैनॉट बी चैलेंज बिफोर एनी हाई कोर्ट और एनी कोर्ट। हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है, आप हाई कोर्ट को कैसे रोक लोगे? सुप्रीम कोर्ट को कैसे रोक लोगे? कोई भी मैटर है, चाहे वो अंडर आरटीआई हो, चाहे वुमेन कमीशन का हो, चाहे नेशनल कमीशन का हो, कहीं का भी हो, this can be taken up before the high court. High court and supreme court, they have inherent power. आप समझते होंगे inherent power का मतलब क्या है? So जो भी कहीं भी कोई क्लैश हो, हम अपने sovereignty को compromise नहीं कर सकते। We are still independent, still all powerful to go in any way we feel like. Judiciary is still independent and can proceed in any directions which it thinks to be appropriate and proper. कोई मनाही नहीं है। कोई बाहर का कानून हमें कैसे रोक सकता है? अब हमारे आपको बताया इस केस में हमने वो एक सजेशंस दी। Not audible, sir. मैम ऑडिबल नहीं है सर। हाँ मैं बताती हूँ। नॉट ऑडिबल सर, कुछ भी सुन नहीं रहा। बोल दिया, I just spoken to the technical team. मैं ये कह रहा था कि भाई
फ्यूचर में कभी मौका मिला तो फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे। कोई भी टॉपिक होगा, कोई जरूरी नहीं कि यही टॉपिक होगा, जो भी टॉपिक होगा इन फ्यूचर उसका स्पेसिफिक कोई भी क्वेश्चन होता है आप तैयार होके आइएगा, and I will feel very happy, pleasure and obliged to have face to face interaction with all people. With this, I think we should conclude, madam. Thank you, sir, for sparing your valuable time to be with us Thank- and enriching our knowledge. Thank you very much. Thank you. Bye, Thank everybody. you, sir. Thank you, sir.